We have a 17 Pro Max Chinese. We need to change IMEI number because this is not working in India. We need to change IMEI. This is the IMEI, but it's not working. This is the version 17 Pro Max Chinese version and Chinese phone. This is the version. Yeah. First shut down the phone and connect USB and open FedEx GSM free tools. Open. हेलो हाँ जी GT में वो जो वन प्लस का नहीं था जिसमें डिस्प्ले के लिए आया था कल, उसमें अभी भी दिक्कत है। कल दिया था ना उन्होंने, वही डिस्प्ले का बदलिंग हो जा रही है। मैंने उनको वही चीज़ बताया। Okay, open MediaTek. तो zoom करना। This tab MediaTek. अपना फोन का जो मदरबोर्ड है वो सही चल My रहा counter so है, इसमें जैसे था slow. पहले Sorry वाली guys. condition है भी इसमें। And open Meta Sir, and boot बात to करना भैया Meta. से। And press boot Meta and okay. लग रही है यार बहुत ज़्यादा। Switch off phone and volume off, volume down. भैया छुट्टी पे हैं। So now it's in Meta mode. Wait for अबे आज मैं आ रहा, मेरा एक दोस्त मिला छोटा वाला। अच्छा सॉरी सॉरी। so now we have Meta mode and we need to open modem Meta. These apps I will share you in YouTube. This is the Meta mode in MTK phones. Select this, do in Meta mode and port USB and select port COM46, then click connect. You will be see here that connecting to the phone. ये छुट्टी बनाने में नहीं देगा, इसके अंदर दे रखा है। तो बेटी इससे देगा ना ठीक है। Enable ADV service and connect USB and select MediaTek and connect. This option is to select this and enable ADV service. Yeah, we have the connection now. And right here IMEI tools, IMEI download.
Yeah, from target. Okay, and you can read here and write IME. Yeah, IME. Write IME in target successfully. Thank you.